Okay, student. Now let us take the another numerical problem. What is this? The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. एक कार में कैसा बैटरी लगा हुआ है? 12 वोल्ट का, है ना? EMF उसका कितना है? 12 वोल्ट. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. 0.4 ohm is the internal resistance of the storage battery, given battery that has been used in car. What is the maximum current that can be drawn from the battery? बैटरी से हम लोग मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं? देखिए लेट अस टेक दिस टू बी ए स्टोरेज बैटरी ऑफ द car. Okay, what is the EMF here? 12 volt, and internal resistance is what? That is 0.4 ohm. Here internal, we denote internal resistance from small r, and this is what? 0.4 ohm. Okay, the EMF of the battery is 12 volt, its internal resistance is 0.4. What is the maximum current that can be drawn from the battery? Suppose here a conductor is connected. Okay, any conductor is connected here of the resistance, suppose R. Then a current will pass through this path, है ना? पहले स्टोरेज बैटरी आप लोग समझते हैं. स्टोरेज बैटरी कैन स्टोर चार्ज, है ना? कार वगैरह में या जो हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं वहाँ क्या यूज करते हैं? वी यूज स्टोरेज बैटरी. इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? दिस इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर. है ना? किसको एक्यूमुलेटर किसको कहते हैं? स्टोरेज बैटरी का. इसका अदर सेकंड नेम क्या है? स्टोरेज बैटरी का एक्यूमुलेटर. Storage battery, and this is also called secondary cell. Cell is of two types: primary cell, secondary cell. Then a storage battery or accumulator is also known as secondary cell. It has the capacity to store charge inside this. A battery जो हम लोग लेते हैं उसमें चार्ज स्टोर हो रखता है, जानते ही हम लोग. तो its resistance of the battery itself is known as its internal resistance, that is given to 0.4. Now let us see the electrical circuit diagram equation. What will be here? Current passing through this is current of the circuit is what we have to know. What should be this current should be maximum. What is the maximum current that can be drawn from the battery? इससे हम ये करंट तो पास कर ही रहा है, सर्किट समझ ही रहे हैं, लेकिन when it will be maximum, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है? करंट तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पता करना है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा. तो नाउ लेट अस सी हियर. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज Ri. We are using KVL. I have already explained you Kirchhoff's voltage law. Then here we are taking Kirchhoff's voltage law. Ri plus Ri potential drop across this, and this is now equal to EMF, that is 12. This drop Ri drop across this, Ri equal to 12. That is what? That is R plus R equal to into I equal to 12. Okay, then I is what? I is equal to 12 divided by R plus R. Okay, and this is 12 divided by R plus what? 0.4. Now let us examine this relation. What we are the value of phi. Here let us see here. 12 is constant, that is given. 0.4 is constant, that is given.
then I will depend upon totally R, value of R, and this will be maximum when this will be minimum, and this will be minimum when this will be of minimum value, this will be maximum, और this will be maximum, then this will be minimum. ओके R अगर ज़्यादा होगा तो I कम होगा, और R कम होगा तो I ज़्यादा होगा. तो R का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0. तो इफ I R इक्वल टू 0, मतलब इसका रेजिस्टिविटी ही लगभग कितना हो? 0. देन I will, then only then I will be maximum. है ना? समझ गए ना कि क्या देख रहे हैं इस रिलेशन से? दिस रिलेशन सेज दैट ऑलरेडी 12 and 0.4 इज कांस्टेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं ना घटा सकते हैं, है ना? किसी सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है और वो फिक्स होता है, तो वो घटा नहीं सकते हैं. तो दीज टू आर फिक्स, देन आई डिपेंड अपॉन आर. व्हाट इज आर? इज इन डिनोमिनेटर. कहाँ है? हर में है. तो व्हेन डिनोमिनेटर विल बी लेस, आई विल बी मोर. व्हेन डिनोमिनेटर विल बी मोर, I will be less, then what we have to take? I should be maximum. Then for it to be maximum, this to be minimum, and minimum value of the resistance conductor may be 0, not less than 0. It will not have negative value. Then minimum value of this R is 0. Then I will be maximum. Then let us put it here, R equal to 0 in this equation. Then from relation 1, what we get? We get I equal to 12 divided by 0 plus 0.4. That is what? 12 divided by 0.4. That is 12 divided by 4 by 12, 10, and that is 12 by 10 by. Okay, if this has been reversed, काटिए. Let us cancel out this. For 3 is 12, then this is what? 3 into 10, 38. So now result is what? Maximum current should be how much? Of 30 ampere.